हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कायरा एडवानी जी का स्केच बनाने वाला हूं। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको डायरेक्ट ड्राइंग करना नहीं आता है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने 5 शीट पे अपनी जिस पे मैं ड्राइंग करूँगा उस पर पहले से ही मैं स्केच करके रखा हूँ। स्केच करने के लिए मैंने शीट पे ग्रिड लाइन पहले से ही बना ली है, जो काफ़ी सही रहता है। जो लोग बिगिनर्स हैं मोस्टली वो लोग डायरेक्ट ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि आप पहले ग्रिड लाइंस अपनी 5 शीट पे जिस पे आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं आप उस पर पहले ग्रिड लाइंस बना लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो में मैं रियलिस्टिक स्केच बनाऊंगा और इस स्केच में मैं कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करने वाला हूं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे उन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। यही सारे मटेरियल्स यूज़ करूंगा। ये है चंकी चारकोल, जो डार्क के लिए की यूज़ किया जाता है। हेयर्स या कहीं भी डार्क यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये नीडेड इरेज़र है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, काफ़ी यूज़फुल है। ये सारे ब्रशेज़ हैं जो पेंसिल्स को मैं मर्ज करने के लिए यूज़ करता हूँ। ये वाइट जेल पेन है, जहाँ पे हाईलाइट दिखाना होता है वहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये सारे पेंसिल्स हैं। ये स्प्रे है, फिक्सेटिव स्प्रे। ये इसको ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद इसको आप स्प्रे कर देंगे तो इससे वो होता है फिक्स हो जाता है, वो रफ़ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। फ्रेंड्स, ये रही मेरी पेंसिल जिस पे मैंने ग्रिड लाइन पहले से बना रखी है। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए एक बात ये कि ग्रिड लाइंस बनाते वक्त एक बात आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डार्क लाइन नहीं बनाना। अगर आप ज़्यादा डार्क लाइन बना देंगे वो फिर रफ़ करने में प्रॉब्लम होगा, वो लाइन्स फिर दिखती रहेंगी। इसीलिए ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, बहुत ही लाइट पेन से चला के ग्रिड लाइन्स बनाना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं।
You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it all. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. Coming for the throne.
हाय गाइस, वेलकम टू बैक। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट स्केचिंग के साथ।